Very warm good morning, guys. This is your friend and guide Abha Mystic 1111. We are going to check the universal guidance coming for you for today. It's a beautiful morning, and we are checking that what is the message from the universe for you. We have got the first card, Six of Cups. Wow, it's a beautiful energy when you are receiving the gift from the universe. You might receive a gift, a message, an important communication, maybe from your past connections or your childhood connections. Justice. You're being served with the good karma. You're being served for your good karma. I think आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं अपने पास्ट में, कुछ कनेक्शंस में, जिनकी वजह से आपको परमात्मा ये गिफ्ट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रू जस्टिस फॉर अ वेरी गुड कर्मा ऑफ योर्स, राइट? Then we got Seven of Swords. Somebody is realizing the mistake. Somebody is realizing the mistake which they have done by giving you an unjustified treatment or an unjustified situation. OMG, it's a lover. It's a lover. I think you have a past connection with somebody wherein there is an equation of love involved, and this person had treated you wrongly, and now they are realizing their mistake and even facing a bad karma for that. That means they are being tested by these spirits, they are being treated badly by the spirits, and now they are tired of it. They are tired. They are finding themselves really defeated. ओके, कोई कोई किस्मत के आगे हार जाता है, कोई यूनिवर्स के आगे हार जाता है, कोई एनर्जीज़ के आगे हार जाता है, तो आपके पर्सन इस वक्त हारा हुआ महसूस कर रहे हैं बिकॉज उनके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ जो इक्वेशन हुई, लव इक्वेशन, जिसमें उनको वो बैलेंस देना था, जिसमें आपने उनको बहुत कुछ दिया बट सामने से आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ. सो दिस रीडिंग इज़ पर्टिकुलरली फॉर समबडी हु इज़ वेटिंग फॉर अ पर्सन जिन्होंने उनके साथ मिस ट्रीटमेंट किया और ये पर्सन अपनी गलती को अब रियलाइज़ कर रहे हैं. दे आर हैविंग द डीप रियलाइजेशन इन दैट अलूफनेस. अकेलेपन में जब इंसान अपनी गलतियों का एहसास करता है, आईना देखता है और फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, आई नीड टू प्रोवाइड बैक, आई नीड टू गिव बैक. तो गाइडेंस ये है आपके लिए कि यूनिवर्स इनको ये रियलाइजेशन करा रहा है दैट दे हैव टू गिव बैक. इतना कुछ रिसीव जब आप किसी से करते हैं, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी अहमियत, आपको उसे लौटाना भी पड़ता है. आपको वो लौटाना ही पड़ेगा, तभी उनकी ज़िंदगी में ये बैलेंस या एबंडेंस आएगा. ओके, and they want to talk about it. We have got two aces, Ace of Pentacles and Ace of Swords. Ace of Pentacles is when you decide to provide, and Ace of Swords is when you decide to interact, when you decide to talk. So this is a beautiful guidance, guys. Beautiful guidance. So somebody is realizing the mistake and wants to come back. Father of Pentacles. This person is a moneyed man, somebody who is really materialistically well established, एंड इनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर अभी ने ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन सब चीज़ों का, इनकी विजडम का, इनके एक्सपीरियंस का, इनके पैसे का कोई यूज़ नहीं है अगर ये आपको जस्टिफाइड बैलेंस नहीं देते हैं इस इक्वेशन में जो ये देंगे, और एक कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा. It's a beautiful guidance. Universe is providing you with this love. Ace of Cups. This person is going to express their immense love for you. So they are going to give you immense love. They are going to tell you that how much deeply they feel for you, how much they love you, how much they actually feel for you. उनका जो प्यार का प्याला है वो आपके इमोशंस और प्यार से भर चुका है, एंड नाउ दे विल एक्सप्रेस दिस टू यू. सो दिस पर्सन वॉज रियली मटेरियलिस्टिक इन नेचर, was stuck on the materialistic things in life, and you have made them realize the value of love. So this is the guidance, guys, that justice is coming in this love equation where this person mistreated you. They want to treat you nicely now because now they want to offer back that stability, that love, that acceptance which you showed them, which you made them realize. So claim these energies and follow my page. Thank you so much. Beautiful love energies, guys. God bless you all.